Good evening, everyone. Amitabh sir, am I audible to you? Yes, yes, yes. Yeah, good evening, everyone. Thank you for coming to Hariom's conference, and thank you, sir, for participating. We'll wait for a couple of minutes because we're still having Rupesh sir who's going to join. So, She will be joining within a 2 to 3 minutes. no He's all worries, no trying to worries. connect. Sure, sure, sir. Uh, And then we'll start with just a couple of minutes. Analyst, yes, actually, my audit manager is also uh, joining this meeting from Sure, our. sure. Actually, in earlier, I have put two names, my names and Mr. Rupesh Gupta, our MD. So he's also joining. So as a panelist, so that he can answer the side by side, he can answer the whatever the question coming in on the dialog box. Perfect. Rupesh sir is here, sir. Rupesh ji Yeah, is I'm already already joined. there. Yeah. I'm Okay. already there. I'm audible. Yes, Yes, yes. sir. So please Okay. allow him to as a panelist. Yes, Okay. sir. Rupesh sir is panelist. I'm making Rupesh sir and Another Amitabh person. sir co-host. Uh, just Another in case person. if I'm sorry, sir. Am I supposed to add someone else also in the Yeah, panel? yeah. Mr. Krishna Kant. Krishna Kant. Yeah, he's just joining. Okay, sure, sure. Request to attendees if we could just requesting just to hold for a couple of minutes. We are having just setting up the panelist. So we'll start in a few minutes. Is it mandatory to open my video also because due to that internet slower, I'm not Not mandatory, sir. Not mandatory, sir. Up to you. okay. I'm just making in case if you want to, just for that reason. Actually, the internet becomes slower for video also. So No worries, that's no worries, sir. yeah. Mr. Krishnakant is already joined. Uh, please. Yes, sir. I've added him to panelist. Yes, thank you. So yes, Krishnakant sir is also here. Krishnakant sir, I hope I'm audible to you. Okay, I believe it will be. Uh, Sir, with your permission, can we start? Yes, yes, please. Okay, thanks everyone for joining to the Hariom Pipes conference call today, and thank you, sir, for taking out time from your schedule, Rupesh sir and Krishnakant sir as Yeah. well, Thank for you. joining this. Yeah. So, sir, before we start, I'll just lay out the today meetings proceedings, how things will go for the attendees, so they'll know how things will go for today. And so to start with, the management will give a brief about the company and with the current happenings, current proceedings. Just a small brief introduction, and post that we'll open the floor for Q&As. If anyone who has a question can either raise their hands or put it in the Q&A section. We'll take the message questions from there. And sir, I had received quite a few questions beforehand also from investors who may have not been able to attend or for some other reason are not be able to part of the meeting. So I will take these questions in the end. The ones that I have with me, I'll take those in the end. So this is the entire schedule. So with your permission, can we start? Yes, please. Perfect, sir. Please take the floor, sir. Good evening, esteemed delegates, and heartfelt thanks to the entire team of Arihant Capital for arranging this virtual platform, which allow us to engage with the prospective investors. I am Amitabh Bhattacharya, and I serve as a Chief Financial Officer of Hariom Pipe Industries Limited. Joining with me, Mr. Rupesh Gupta is our Managing Director, and along with me, my counterpart, Mr. Krishnakant Jaju, Chartered Accountant, as an Audit Manager. We would appreciate the opportunity to communicate in both in English and Hindi to ensure that we can effectively convey our thoughts. Before we commence the one-on-one question and answer session, we kindly request the meeting coordinator to grant us permission to share our screen. Please allow us to share our screen. Sir, I've made you co-host. You can, sir, share your screen. Okay, thank you.
Thank you, sir. This will enable us to present our company's information to all the attendees. About Hariom, it is established on June 21st, 2007. Hariom Pipe Industries Limited stand as an integrated manufacturer renowned for producing a diverse range of products including galvanized pipe, coil, MS pipes, scaffolding, HR strips, MS billets, and sponge iron. Notably, in April 2022, HPIL achieved the milestone of becoming a listed public company, achieved through its successful initial public offering. The company's registered office is strategically located in Hyderabad, Telangana. At the helm of HPIL, a distinguished promoter, Mr. Rupesh Kumar Gupta and Mr. Shailesh Gupta, who hail from a lineage of third-generation entrepreneurs. Their individual expertise and extensive experience spanning over a decade in the iron and steel industry have played a pivotal role in shaping HPIL trajectory of growth and success. So this is a small introduction about Hariom. Now we are coming into the slide presentation. Here first the slide is vision and mission and goal. So basically our vision is expanding the products and portfolio horizontally, involves enlargement the range of available products and entering new geographical markets, while vertically aiming to enhance the value of our offerings, like our value-added products, product baskets, such as MS pipe, galvanized coil, etc. And our goal is, our objective is to achieve a revenue of rupees 2,500 crore in FY26, while maintaining or improving our EBITDA performance. So this is our goal. The next slide is one of the most integrated players of steel pipes and tubes. We are one of the most integrated steel players. We are among the few in the country that began our production process with sponge iron, while many others start by purchasing HR coil to make pipe. We take a different approach. We source our iron ore and produce our MS billets, HR coil, and then MS pipe, all within a single complex. This integrated approach significantly reduces our cost. Here, notably, by controlling HR coil production, we can tailor our manufacturing to meet customer demand and gain a pricing advantage, which strengthens our EBITDA margin. In addition to that, our integrated facilities allows for shorter turnaround times and efficient management of raw materials inventory, particularly for low thickness HR coil like 1.5 mm and below, which are challenging to source from the market, basically from who are purchasing the HR coil and making pipes. It is not difficult for it. This is the USP of Hariom. As an integrated steel manufacturer, we use the recycled steel scrap for producing our pipe, that to the extent of 30%, which is also cost efficiency and environmental friendliness. Moreover, in our state-of-art technology and plant is a zero liquid discharge system for water recycling, and carbon dust, which is the carbon particle mixing in generally in all the steel industries in the emission. So we are also control them, and entire carbon particles we convert into the solid, and which can be used in the printing industries, which is additional, you can say, as a ESG concept, which we have adopted to our production process to better serve the world. We have built a strong foundation to drive our future growth. We have demonstrated strong performance for FY22, FY23 with a revenue of CAGR of 41%, EBITDA CAGR of 36%, and PAT CAGR of 53%, which you can see in the slides. Additionally, to complete the capex and our bandwidth, we have consistently increased our capacity for value-added product, as I mentioned in earlier, MS pipe, HR strips, GP pipe,
achieving a CAGR of 51%. So these are the short story. And then coming into the progressive adding capacity and value-added products, you can see on the slides, from the incorporation to till 2023, we have enhance our production installed capacity from past 3 years, almost all 51%. Modern facility and driving efficient and sustainable productions. We have recently launched a state-of-art cold-rolled and GP plant in Hyderabad, featuring cutting-edge technology. Our cold-rolled tandem mill, in particularly, is capable for reducing the HRPO coil thickness by up to 60%, which enabling us to produce high-quality materials for various industries such as electrical, engineering, automobile, and defense. Here, I'm introduce my MD. He can share some value-added products and their profitability and their prosperity. Mr. Rupesh Gupta, sir, please. I'm requesting you to explain properly. नमस्कार सबको। ये जो प्रोसेस है, बेसिकली ये प्रोसेस में कोल्ड रोलिंग होती है। जो HR कॉइल जो आता है, उस HR कॉइल को हम लोग CR में कन्वर्ट करते हैं। टैंडम मिल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो कि बड़े यूनिट्स में भी नहीं लगा हुआ है। साउथ इंडिया में ये पहला यूनिट रहेगा जहां पर हम इससे काम करेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप रॉ मटेरियल को आप डालते हो, उससे 60% to 70% एक सिंगल लाइन में ही वो डायरेक्ट रिड्यूस हो जाता है थिकनेस उसका। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल 2 mm का हमने थिकनेस का मटेरियल डाला और हमें फिर वापस उसका चाहिए कि 1.2 थिकनेस चाहिए, वो हो जाता है। जनरली दूसरे मशीन्स में ये होता है कि आप एक बार उसको डालते हो, उसको 20% रिड्यूस करते हो, फिर इंसर्ट करते हो, फिर 20% होता है। ऐसे करके 3-4 प्रोसेस में वो रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस के अंदर ये टैंडम मिल का जो प्रोसेस है, ये बेसिकली एक ही बार में रिडक्शन कर देता है, विच इज स्टेट ऑफ आर्ट। तो आज की डेट के अंदर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ही मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटीज को हम ग्रो कर रहे हैं, विच इज वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट। आगे के स्लाइड्स कर लो अमित। Amit sir, अमित आगे के Yes, स्लाइड्स। yes. So thank you, Rupesh sir. Here, stronghold in the South and West India market, we have successfully expanded our presence in the South and West Indian markets. Here you can see, currently we have over 650 active dealers across the region, but our products and brands are available through more than 1,500 plus outlets. In the upcoming year, we are dedicated to further penetrating the Western Indian market with our new range of value-added products. Like as Rupesh sir already explained, that GP product and so many product baskets, we are trying to penetrate in the entire Western India to enhance our dealer capacity and market strength. So these are the corporate customers which we have. Sustain growth and profitability, showcase market reliance and adaptability. Here you can see from in 2020, we are selling around 44,000 metric ton. In 2023, we are targeting 110,000 metric ton. And already we have completed 65,066 in last financial year. Average price also we are getting very good comparatively to the other players. Blended EBITDA is also quite impressive. We have already done from FY20 to FY23 2.7 capacity increasing and sales volume subsequently 2.4, and our EBITDA percentage per metric ton is enhanced to the extent of 42%, and we are very much hopeful to it will be enhanced in the coming ensuing year also. Here our board of directors, Mr. Pramod Kumar Kapoor, Chairman and Independent Director, Mr. Rupesh Kumar Gupta as a Managing Director and Shailesh Gupta Whole-Time Director, Mr. Somen Bose, he is the Independent Director. Here I would like to introduce
Mr. Somen Bose. He was earlier ex-Tata Managing Director, CEO in their Thailand plant. Mr. Rajendra Reddy, he is an independent director. He's earlier as a general manager, working as a general manager in Canara Bank. Mr. Sneha Sankala, she is a practitioner, company secretary, and myself as a CFO, and Chirag Pratani as a compliance officer and CS. So this is the growth economy. We are very much looking forward for that, because our main customer base is from the rural and urban area, and the day-on-day basis, the construction is going on, and due to that construction and affordable construction, and India's growth is going on that basis, infrastructure level. So accordingly, the steel is very essential product for infrastructure, and Hariom growth perspective is also coming into the same line. So we are very much hopeful for this. Forward integration and marketing focus to drive growth, expanded billets, HR coil capacity, and GP plant at Tamil Nadu. We have ramp up. Marketing and branding also we are started increasing the share. Capacity expansion is also already, I have explained that. Total 250 crores we have invested, and we have reached almost all 52%, 53% of CAGR. Geographically, expansion is also going on day-on-day basis, and we are trying to penetrate the entire Western India in the coming ensuing year. Growth projects, driving growth and sustainability. After completed the expansion of pipe mill, 132,000 metric ton, GP plant in Mehbubnagar, 120,000 metric ton. Sponge iron unit is also going on. It is from 36,000 present capacity is there. It will be in the coming year, it will be concluded almost all 72,000. So we can secure our major raw material, that is sponge iron, for our melting furnace from our integrated. We are not depending in the coming future on the other players or suppliers. Financial overview, I think everyone aware about our financial robust performance. So from FY22 to FY23, we have growth like anything in every aspect, not only in revenue terms, in EBITDA, in PAT, EPS, return ROC, and ROE, every aspect. Recent past, we have raised the fund from IPO 130 crores, and from preferential equity, we have raised 190, and we have out of 190, it's a preferential equity come warrant. So within 18 months, we will be getting till March 31st, 2023, we got 102,000 crore, 102 crores, sorry, and remaining 88 crores will be coming another within 18 months from the date of allotment. So that is next day within 18 months. Presently, we are A- stable and CRISIL A2 rated company. So this is our investing in our growth and uses of cash. So in terms of that, you can already aware about our cash flow. We have borrowing long-term 93 crores, short-term 110 crores, funds from operation 56 crores, and IPO proceeds and other preferential equity total 228 crores. All togetherly, we have invested in our investment activity through our this thing. This is from my side, all the thank you. This is from my side. We need to just add, Amit, the investment what we got is from the marquee investor, and they are the Malabar Investments. They Yeah, have invested in our company. yeah, That's Malabar. a good sign of our company, basically. Yeah, Malabar recently invested,
So I'd like to the request to the Arihant team. Shall we start question answer sessions live? Or if at Sure, all sir. someone wants to understand the business more, then we can speak on that also, not an issue. Yes, sir. I think more and more questions, as more and more questions come, I think that will be clarified. Yeah. So with your permission, we'll start. We're already Yes. having quite a few hands raised. So there are a few questions in the chat box as well. First, I'll start with the attendees, then I'll move to the chat box. Starting with Udit Sehgal, sir. I've unmuted your line. If you could ask your question. And sorry, I'm sorry, sir. Before you start, I'd request everyone to please limit the questions for now to two, and post that rejoin the queue, because there are a lot of hands raised and a few questions in the chat box as well. So just a request before we start, please limit it to two for now. Yeah, actually, sir, my small request to the all the delegates that chat box they have put so many questions. I think all of the questions we can answer orally, and leftover whatever the questions we are not able to answer for the time constraint, we can answer through you over mail also, not an issue. Either if at all they are interested, we can ask Arihant team to coordinate with them and have a plant visit also. We are okay with it. So Arihant team Yes. can take it forward, not an issue. So over voice also it is better to answer, because all of the common questions I believe most of the questions are coming commonly. Perfect. I So know, worries, sir. I'll do one thing. I'll collect all the remainder questions which are unanswered. I'll collect them and I'll get them answered by you, and then I'll post it to the attendees. okay. Yeah. So now if any candidate delegates has any questions, they can ask directly in that meeting so that we can answer live. Sure. Udit, sir, if you could start. Yeah, Yes. can you hear me? Yes, loud and clear. Yes, Yeah. sir. Yeah. Sir, I would like to know what was our capacity till last year? What is the capacity now? What was the capacity utilization last year, and what are we expecting now? Because from the sale, I can see we did around 1 lakh odd tons of sale, but our capacity now, the expanded capacity looks to be around 7 lakh tons. Yes, absolutely correct, sir. Yeah. Last financial year, FY23, our total installed capacity, if you want to note, you can note it. Yes, please. I'm talking about gross installed capacity unit product wise. That is 6,53,232 metric ton. In that 6,53,232 metric ton, we have 3 units. So first is coming from sponge iron. We are having 36,000 installed capacity. Second, we are coming into our Mehbubnagar unit, integrated steel plant, where we are having MS billets, HS strips, MS tubes. That capacity is MS billets 104,232 metric tons. HS strips installed capacity was 1,24,000 metric tons. MS tube installed capacity was 84,000 metric tons. And scaffolding installed capacity was 5 lakh metric tons. Here, in the last financial itself, March 23, we have asset acquisition in Coimbatore Perundurai unit as a galvanized plant. That unit capacity was 1,80,000 ton. Okay. So this is our total capacity. And we have gross utilized 2,96,000 metric tons. So that gross utilized, again, we are captively utilized, like MS billets. MS billets, we have produced 86,000 metric ton, whereas we are selling only 7,000 because leftover all the quantity we are captively used for our next product for HS strips. Likewise, our gross production was 2,96,000 metric ton. And last year we have sold around 1,09,085 metric tons total volume. And this year our installed capacity will become 7,37,000 metric tons. And our production utilized capacity will become 4,64,000 metric tons. And we are expecting to sell around 2,36,000 metric tons of value added and mixed product together. So just a follow up. See, mostly
a lot of things are the billets, they are all being used in-house, right? The finished product is what? The pipe and the scaffolding, what we are selling The outside. finished product is MS tubes, Okay, scaffolding, right, galvanized pipe, right. cold rolled pipe, galvanized coil, and cold rolled coil. Okay, These are all the value added products. okay. So we are selling the coil also outside. Yeah, cold rolled coils are also using by the forward integrated engineering sector, automobile sector. Okay. Huh. So, So, sir, for our roadmap of 2,500 crores by FY26, do we need to do further capex? Do we need to enhance the no, capacity, or this is this no, this capacity is enough? capacity is allow us to achieve this target. Okay. Achieve this target. We are not going for any further expansion. See, whenever any greenfield project, initially it is taken some more time to stabilize. Right. Once it is stabilized, we are within the target is not 5 years back future. It is within the 2 year we can achieve. Now we are standing on 2000 FY24 and we are talking about FY26, 25-26. So we can easily achieve through this expansion facility only. And so the main expansion or the main incremental sales will come in the tubes or the coils? What? No sir, it's all a value added product only. Okay. अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जीपी कॉइल और जीपी पाइप के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है Okay. इन टर्म्स ऑफ रेट. इसमें क्या होता है जी, बेसिकली कि जो रिक्वायरमेंट है वो मार्केट की डिफरेंशिएटेड हो जाती है। पाइप अपनी जगह पे यूज होता है, कॉइल अपनी जगह यूज होता है, और देन सीआर कॉइल अपनी जगह यूज होता है। अगर हम उसके मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करते हैं तो जो जीआई का जो कॉइल है वो जो है ना लगता है पूरी पीईबी इंडस्ट्रीज में, जो प्री फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड बिल्डिंग होती है उनमें जो जेड प्रोफाइल और यू प्रोफाइल्स जो लगते हैं जिससे शीट्स फिक्सिंग होती है, उन जगहों पर ये जीआई का कॉइल लगता है। और जो सीआर का जो कॉइल लगता है वो फैन इंडस्ट्रीज में लगता है, वो बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में लगता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में लगता है। और उसी का जब हम सीआर से फिर हम पाइप बनाते हैं तो वो अगेन उसका जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगता है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग में लगता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन से वाले प्रोडक्ट को कहाँ पर हमको मार्केट करना है, उस पे बेसिस के ऊपर हम वो प्रोडक्ट को बना के मार्केट में देते हैं। तो वी आर हैविंग मल्टीपल बास्केट्स, जहां पर उस बास्केट के अंदर से काफी जगहों के ऊपर मटेरियल चला जाता है। तो वी आर नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन पाइप, वी आर इवन हैविंग द एरिया कि जहां पर हम कॉइल भी बेच सकते हैं जो कि पाइप के प्राइस में ही बिकता है। तो हमारा पाइप बनाने का मेहनताना बच जाता है और वहां पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। So तो average, sorry, Sir, please go ahead. Udit sir, I would request you to please. Just last question. So the average profit on the pipe and the coil is around 7,500-8,000 rupees per ton? या पाइप में ज्यादा होता है, कॉइल में जो है सो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर वो कॉइल अगर उस प्रीमियम में हमको बिकता है तो ही हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं। वी डोंट वांट टू जस्ट कैटर इनटू द कमोडिटी बिजनेस। तो हमारा वैल्यू एडिशन का ही मॉडल है और वैल्यू एडिशन में ही हम काम करते हैं। ग्रेट सर। और सर एक प्लांट Okay. विजिट के लिए आप बोल रहे थे, उसका आप डिटेल प्लीज बताइए, शेयर करिए। आई वुड लव वाया अरिहंत आप कभी भी बात कर सकते हैं सर, दे विल कोऑर्डिनेट ऑन बिहाफ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। Yeah, thank you. Moving on, I'd request everyone to please, it's a request that please limit the questions to 2 only, because there are a lot of other participants who want their questions answered. So, moving on, the next question is from Mr. Deepesh Sancheti. Sir, if you could ask a question. Am I audible? Yes, Yes, you're audible. Yeah, Mr. Deepak. Yeah, welcome. Yeah, hi. Just a question regarding your inventories and trade receivables. In this year, the trade receivables and inventories have gone up at a significantly high rate. Just want to know why was this, and are these inventories very high cost inventories? No, basically, sir, to be honest, when you are going with any greenfield project, initially, this is Hariom greenfield project. Initially, to stabilize the operations, we have to keep some, to maintain the range, we have to keep some stocks in terms of raw materials, in terms of finished goods. So basically, in the last financial year, FY23, in the March itself, we have asset acquisition concluded in Perundurai, and we have started the operations.
So therefore, we have in March 23, we have incremental stocks in raw material and as well as in finished goods. And as well as due to that only, it is showing some incremental holding level high in terms of raw material, finished goods, and as well as book debts. But in the coming ensuing year, another 6 to 7 months, we have already taken an initiative to streamline all those things in the mode of channel financing, vendor financing, and so in the coming financial year onwards, you will get a positive impact in operating cash flow. It is automatically happen. Okay, so this is just because of the higher expansion. Now, just Yes. one more question. We have seen almost a CAG, I mean, the sales growth at around 50-55%. Yes. Now, I just want to know that is this sales growth normal, as in we are looking at the next 2 to 3 years at the same rate, or it will normalize? And if yes, if it normalizes, what rate do you expect that it will normalize? Sir, last year we have concluded our recorded turnover was 644.46 crores. This year we are expecting it is almost all double from the last year recorded turnover. So in such aspect, you can understand, we can understand the percentage of growth on turnover, and it is going on subsequently in the ensuing this coming years also, because already we have expanded and our all the machinery have been concluded the erection process also. So once the operation streamlined gradually, our volume and in terms of volume and in terms of value, both the turnover will be in the increasing trend. So I didn't get you. Sorry, you're saying that in this year it will double from the last year? Yeah, definitely, sir. Oh, wow. And you see that in the next 2 to 3 years also, I mean, even if you grow at already lower rate, is yes, already in my slide also, we have mentioned clearly that our goal is FY25. Our goal is to achieve 2,500 crores in FY. Actually, it is our internal targeted is calendar year FY25, which is coming actually financial year FY26. So 2,500 crores we have to be achieved. So this is our internal target, and definitely we'll do it. Even you said 2,500 crores, even if it happens in FY26, 27 also, I think it will be a great thing. I mean, I'm just saying as an investor point of view. But just last question, that what is the order book right now, and how much do we expect that the higher orders coming from? Sir, actually, which industry? सर बेसिकली मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि हमारे पास यही यूएसपी रहता है कि हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होने के वजह से बहुत शॉर्ट टाइम में हम डिलीवरी करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास कभी भी हमारा 1 मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी जो भी है पाइप के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एमएस पाइप, उसकी पूरे के पूरे ऑर्डर बुक्ड रहता है. हमारा यूएसपी ये रहता है 1.5 एंड बिलो रेंज ऑफ 1.5 थिकनेस की, जहां पे कॉइल पाइप की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं रहता है, रिटेल सेगमेंट रहता है, फैब्रिकेशन सेगमेंट रहता है, वहां पे आपकी प्राइस मार्जिन भी ज्यादा रहता है, और वहां पे हरिओम का मोनोपोली है. हरिओम उसके पूरे कस्टमर्स को कैटर करता है इन साउथ इंडिया. तो हमारे ऑर्डर बुक के हिसाब से आपको एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बोलना मुश्किल है मेरे लिए, बट यू कैन एज्यूम दैट कि हमारा पूरे एंटर 1 मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी इन पेरुंदुराई एंड हरिओम महबूब नगर is already booked prior to 1 month. 1 month. Perfect. Yeah. Okay. And thank you so much, Deepesh just sir. one I'm really question, sorry. just one question. I'm sorry, but because there are a lot of participants. Okay. So I'll have to. No problem. Thank you. Thank you. Sir, once again, a request to all the participants, please limit your questions to 2 only, because we'll be in short of time and then we won't be able to answer the other participants' questions. The next question will be from Mr. Shikhar Mundra. Sir, if you could please unmute yourself and ask the question. Yeah, hi sir. सर ये जो 700 करोड़ है जो अपना रेवेन्यू 742 करोड़ करंटली, उसका ब्रेकअप क्या है, एंड जब 2500 करोड़ व्हिच वी आर एमिंग, सो उस वक्त क्या ब्रेकअप होगा? Okay, sir. Just 700. Yeah.
सर देखिए, मैं 644 की जो ब्रेकअप है वो रफली अप्रोक्सीमेटली स्पॉन्ज आयरन में 28 करोड़ था लास्ट ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट FY23 ऑडिटेड फिगर। राइट। हाँ, सो 28 करोड़ स्पॉन्ज आयरन था। बिलेट्स आपकी 35 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली। स्ट्रिप्स आपकी एचआर स्ट्रिप्स था आपका 69 करोड़ की। एंड एमएस ट्यूब था 394 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली। स्कॉफोल्डिंग अगेन 23 करोड़। एंड गैल्वानाइज्ड पाइप जो हमने शुरू में ही बोला था कि मार्च मंथ में हम लोगों ने एसेट एक्विजिशन किया था पेरुंदुराई के यूनिट का। फ्रॉम दैट प्लांट वी गॉट अराउंड 95 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। 95। सो दिस इज द ब्रेकअप। एंड जब 2500 करोड़ की होगी, हम लोगों की टारगेट यही रहेगा सर, सब मैक्सिमम 98% coming from the value added products as mentioned in earlier. Our value added product is MS tubes, cup folding and GP pipe, GP coil, cold rolled pipe and coil. All togetherly it is coming from that value added product only. राइट सर। तो सर उस वक्त फिर मार्जिन्स क्या दिखेंगे? आई बिलीव इट विल बी मच बेटर अभी से, तो उस वक्त क्या मार्जिन मार्जिन कर सकते मार्जिन देखिए सर, हम लोग देखिए टू बी ऑनेस्ट इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं रहता है। आप स्टील की मार्जिन को जो है ना ब्लेंडेड एबिटा के साथ अगर आप जाएंगे हैं? तो राइट। आज मेरा FY23 ऑडिटेड मार्जिन था, ब्लेंडेड एबिटा था 7,585। ओके। राइट। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज 9,500 के आसपास आना चाहिए राइट सर। राइट सर। ब्लेंडेड एबिटा। ओके। एंड सर, एंड ये जो अमाउंट रेस किया था अपन ने मलाबार फंड से, सो व्हाट दैट वाज एट व्हाट रेट? एंड जो अभी जो वारंट्स आएंगे वो क्या रेट पे आएंगे आगे? जो 190 करोड़ का अमाउंट है, लाइक 102 नहीं, करोड़ प्लस 88। पूरे के पूरे ही सर हाँ। 345 रुपीस में इशू हुआ था, ओके। जिसमें वारंट के 25% हम लोग ऑलरेडी March 31, 2023 में रिसीव कर लिए। रिमेनिंग 75% विल बी रिसीव विद इन 18 मंथ्स। ओके। ऑलराइट। ऑलराइट। और एक लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द केपेक्स। सो अभी कितना केपेक्स आ चुका है बैलेंस शीट पे, एंड कितना अभी लगाना बाकी है फॉर द एक्सपेंशन? सर हमारा मैक्सिमम कैपेक्स आ गया है। हो चुका है। जून 2023 की जो हमारा रिजल्ट्स था हाँ। उसमें हमारा मैक्सिमम कैपेक्स, ठीक है, वो बैलेंस शीट क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट था तो राइट। राइट। या। बैलेंस शीट आपका नहीं गया था, लेकिन हाँ। उसमें मैक्सिमम कैपेक्स आपका रिफ्लेक्ट हो गया है। उसका डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया था जून में ही। और ओके। रिमेनिंग हमारे पास अनदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 30 to 35 करोड़ के आसपास की और कैपेक्स की एडिशन आने वाला है, जो आपका सितंबर में भी आ सकता है या अक्टूबर में आएगा, मतलब एंड इधर से दैट विल बी सेकंड। इनफ टिल FY26 जो 2500 करोड़ का गोल है। हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट। ऑल बिल्कुल। राइट। ऑल राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. So the next question we'll take from Mr. Ruzmik Oza. If you could please unmute and Thanks. Good afternoon, Rupesh ji. Good afternoon, Amit ji. वेरी आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून रुचमिक जी। Yeah. Connecting after a long time. Yeah. Sir, just two questions. One is on your newly expanded capacity. अपन जो CR cold roll plus GP की डाली हुई है, जी। 1,20,000 is the total capacity. I wanted to know this year FY24 what kind of volumes we'll do, and next year what kind of volumes we'll do. One and two is आपका जो blended realization जो था last year का, which was around 60,000, 59,000. Can we get around 80,000, 85,000 from this GP unit which you put in Hyderabad? I'm not talking of Tamil Nadu, just the Hyderabad only. तो इसमें क्या होता है, जो हैदराबाद का जो यूनिट है ना, इसमें बेसिकली जो ना सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हम बनाएंगे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे। जैसे पैकिंग स्ट्रिप होती है, आज अगर हम पैकिंग स्ट्रिप की बात करते हैं, दैट उसका अगर हम प्राइस अगर देखते हैं, दैट विल गो अबाउ 100 रुपीज ए केजी। बट आज अगर हम पाइप बेचते हैं, दैट विल गो अबाउट 72 रुपीज ए केजी। तो आज मुझे अगर मार्केट अगर वो एक्सप्लोर करके उस तरीके का अगर बनाना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हमारा गोल इज 100% क्लियर कि जहाँ वैल्यू एडिशन है उसी प्रोडक्ट को हम एनहांस करके उसी लाइन के ऊपर जाएंगे। We are not fixing ourselves to only coil, nor pipe, nor scaffolding, nor any value-added products. तो जहां हमको लगेगा कि इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर पैसा मिलता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग एनहांस करेंगे, सेइंग कि वहां पर जो है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हो जाए हमारा, प्लस साथ में वो कंपटीशन भी ना रहे। No, sir, to be particular,
this year what will the volume from this newly established capacity जो अपने को डाले हैं CR और जी GP की, जी ये साल वॉल्यूम कितना आएगा, नेक्स्ट ईयर कितना आएगा? एक सेकंड है रियलाइजेशन क्या होगा, ब्लेंडेड रियलाइजेशन, एंड थर्ड ब्लेंडेड जो एबिटा है, लाइक एग्जिस्टिंग तो वी आर डूइंग अराउंड समथिंग लाइक 7,600, तो 7.5 ये जो नया प्लांट का एबिटा है, आई प्रिज्यूम इट शुड बी एटलीस्ट अराउंड क्लोज टू 9-10,000 के आसपास होना चाहिए. तो इफ यू कैन जस्ट क्लेरिफाई दिस, इट विल बी हेल्पफुल. अमित, इसमें जो वर्किंग थी बताओ. Amitabh sir, if you could please unmute. Okay. इसमें जितने भी क्वांटिटीज है ना, वो क्वांटिटीज की डिटेल हम अलग से आपको दे देंगे, नॉट एन नो इश्यू. प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. तो एंड माय अकॉर्डिंगली सेकंड, देख के कर लेते हैं. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन सर, ये जो तमिलनाडु का प्लांट विच वी हैव टेकन जी एंड इट्स 1,80,000, तो उसका जी भी एक बात बताएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट्स ओनली अ कन्वर्टिंग प्लांट, बिकॉज यू डोंट या नॉट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड. तो उसका करेक्ट. भी इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ ब्रेकअप दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स यू आर लुकिंग, एंड वहां पे आई प्रिज्यूम योर एबिटा मार्जिन्स मे नॉट बी मोर देन 5,000 to 6,000 पर टन, राइट? करेक्ट करेक्ट. तो उसका एक वहां वॉल्यूम पर ब्रेकअप भी मिल हम सकता है? पकड़ते हैं कि अगर 3,500-4,000 रुपीज का हम अबिटा मार्जिन वहां पर पकड़ के चलते हैं. और बेसिकली जो है सो एज आपने राइटली पकड़ा कि उसको जो है ना एज ए कन्वर्टर है, तो वहां पर तो हमको रॉ मटेरियल लेके आना है और उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके बेचना है. एंड इसका वहां पर एक्विजिशन करने का रीजन ये था बेसिकली कि वहां पर से हमको मार्केट ऑफ केरला, क्योंकि हमको साउथ इंडिया यहाँ पर से हैदराबाद से कैटर करना मुश्किल होता था, तो हमने अपने प्लेसमेंट्स रीजनली बनाए हैं, जहां पर से जो है सो साउथ इंडिया का मार्केट सारा, केरला मार्केट एंड तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये पूरा मटेरियल जो है वो वहां से जाएगा पेरुंदुरई से. और जो हैदराबाद वाला जो यूनिट है, ये दिस विल बी कैटरिंग अप टू गुजरात एंड उड़ीसा बेल्ट, मतलब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड, दोनों साइड में हम कवर करेंगे कोस्टल एरियाज को. तो होल राइट एरिया इज टू कवर अप द मार्केट एरिया, जहां पर से जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो हम रीजनली उसको कवर अप कर सके. राइट राइट राइट. जस्ट टू Okay. कंक्लूड सर, क्या है Rusmi. ना, वी नो द एग्जिस्टिंग आपका जो है वो ब्लेंडेड रियलाइजेशन 59,000 रुपीज पर टन है, एबिटा ब्लेंडेड 7,500. अभी नया बिजनेस एक तो आपका 1,20,000 जो आएगा वो नए GPCR प्लांट से, उसका अगर जी अपने को वॉल्यूम ब्लेंडेड एबिटा, सॉरी ब्लेंडेड रियलाइजेशन ब्लेंडेड एबिटा मिले, तो वी गेट अ हैंडल ऑन दैट. एंड इफ यू नो द वॉल्यूम्स यू लुकिंग इन तमिलनाडु, you have spoken EBITDA of 4,000, तो क्या we can get a complete picture कि what या will be the अगर आप वहां का revenue? लेते हो तो आप यू कैन अज्यूम इट एज 4,000 रुपीज, नॉट एन इश्यू. और यहाँ का जो अभी एबिटा है, हम उसको जो है सो 8,000 रुपीज के आसपास कवर अप करके लेके चल सकते हैं. नए प्लांट हैदराबाद का जो है वो? नए वाले के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम ब्लेंडेड की बात कर ओके रहे हैं. ओके, ठीक है ठीक है. मतलब जो जुना हैदराबाद और नया हैदराबाद प्लांट का ब्लेंडेड 8,000 यू कैन टेक योर से. हेलो. या एंड खाली मुझे एक Sir, लास्ट का Rusmik इसमें, sir, I just request we नो have a प्रॉब्लम few नो other प्रॉब्लम, participants no also. issues. Yeah. I'll just wait for the volume figure from their side for some time. Thanks. Yeah, Yeah. continue. Thank you. So the next question we have from Chirag Kachadia. I request, sir, if you could please unmute and ask your question. Yeah, I request to upload this presentation on Exchange because I didn't get any information on it and also on your website. Such suggestion, and I have a couple of questions like at this 2,500 crore kind of turnover, what EBITDA per ton we are targeting, and geography wise, which are the major markets which are going to be participate in this journey by FY26. And will it be B2B or B2C? So basically, thank you Chirag ji and for your suggestion as well. तो जो मार्केट है हमारा, दिस विल बी टुवर्ड्स साउथ ओनली, क्योंकि ये रीजनल मार्केट ही चलता है एंड वी वांट टू एक्सपैंड आवर रीजनल ग्रोथ बाय सप्लाइंग द वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी मोनोपोली रहनी चाहिए. तो अभी हम जब मार्केट की सेग्रीगेशन को देखते हैं, तो उड़ीसा बेल्ट तक मटेरियल हमारा जा रहा है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में जा रहा है. नाउ वी आर टारगेटिंग द गुजरात एंड राजस्थान बेल्ट ऑल्सो. तो फंडामेंटली यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है, दिस विल गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि रूरल मार्केट ऑफ ऑल द कंट्री में जितने भी रूरल मार्केट्स हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एवरीवेयर द ग्रोथ इज देयर.
एंड जहां भी ग्रोथ है वहां पाइप लगाना स्वाभाविक है। आज हम बजटरी हाउसिंग की बात करते हैं, हर गवर्नमेंट अपने बजटरी हाउसिंग को, स्लम्स को निकाल के बजटरी हाउसिंग में जा रही है। तेलंगाना इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब इन इट। तो फंडामेंटली जहां जहां पर जो भी जगह पे बजटरी हाउसिंग होगी वहां पाइप की रेलिंग लगेगी लगेगी। जहां भी कंस्ट्रक्शन होगा अगर मीडियम काइंड का, वहां पर भी वही होगा। हाई एंड कॉम्प्लेक्सेस में जहां भी लगेगा वहां पर जो है ना शेड्स वगैरह के अंदर ये पाइप लगेगा, ना कि रेलिंग्स में। तो फंडामेंटली बहुत सारी जगहों पर जहां पर वो पाइप का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो केबल ट्रे हो, चाहे वो पाइप के योर कैमरा के पोल्स हो, चाहे स्ट्रीट लाइट पोल्स हो, चाहे आपके होर्डिंग्स हो। आज जितने भी पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, होर्डिंग्स का फ्रेम जो होता है वो पाइप का होता है। तो फंडामेंटली पाइप का यूसेज इज नेवर एंडिंग, ये तो चलने ही वाला है। तो जितना क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे, उस बढ़े हुए क्वांटिटी को बेचना कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लग रही है। जैसे अभी बात हुई थी कि हमारा बुक शेल्फ क्या है क्या नहीं, तो हम ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना ऑलरेडी सोल्ड आउट चलते हैं, तो हमें कभी भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड सबसे बड़ा हमारा यूएसपी ये है कि बेसिकली आज अगर कोई कस्टमर हमसे माल मांगने आता है, से फॉर एग्जांपल उसे 1.2 mm थिकनेस का मटेरियल चाहिए और वो उसको चाहिए 2 दिन के बाद ही, तो हम रोल करके उसको 2 दिन में दे सकते हैं। वेयर एज बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है ऑन टाइम डिलीवरी। एंड हम लोग अपना मटेरियल को स्टॉक करके रखते हैं, ताकि जो है ना जब भी मटेरियल किसी को भी कोई भी पार्टी को अगर रेडीली अवेलेबल चाहिए, तो हम अपने यार्ड में से ही उसी को सीधे डायरेक्ट लोड करके देते हैं। So we do not deal with distributorship model. We are having 100% dealership model. In this dealership model, we have acquainted our डीलर्स ऑल्सो, जहां पर जो है ना कोई प्लैटिनम ग्रेड पे है, कोई गोल्ड ग्रेड पे है, कोई सिल्वर ग्रेड पे है। तो ऐसे करके हमने सबकी ग्रेडिंग बना रखी है। और ईआरपी में वहां पर सबके लिमिटेशंस हैं कि अगर जो लोग जितने लेवल पे काम करेंगे उनको उतना मटेरियल दिया जाएगा। तो वी आर नॉट प्लेइंग ए मेजर रोल इन सप्लाइंग टू 1 or 2 कस्टमर्स, बट हमारा जो गोल है वो पूरे रिटेल्स को टारगेट करना है, और रिटेल में ही कमाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर मॉडल में जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर सारा पैसा कमाई का हमारा ले लेता है। तो वी डोंट डील विद इट। एंड हमारा बैकग्राउंड इज फ्रॉम द ट्रेडिंग बैकग्राउंड। तो ट्रेडिंग बैकग्राउंड के अंदर हमें पता है कि कस्टमर का इंटेक क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। उस कस्टमर बिहेवियर को हम अच्छी तरह पहचानते हैं, इसीलिए हमने ये मॉडल को सिलेक्ट किया है। I hope that was the answer that you were looking for, Chirag sir. Yeah, I get it. Thanks. Okay, thank you. So we'll take the next question from Jasmine Kaur. If you could please unmute and ask your question. Okay, we will move on to the next participant. Rusmik sir, if you could please unmute and ask a question. Yeah, thanks. So I just going back, if you can just help us with the volumes you're looking for this from the new expansion of Hyderabad plant this year, next year, and from the Tamil Nadu plant this year, next year, it will be helpful. Sir, can you repeat again? The volume we are targeting this year from this newly commissioned plant in Hyderabad for Okay. CR and GP this year and next year, and also the volume from the Tamil Nadu plant, Perundarai plant for this year, next year. Okay. Sir, togetherly we can say, see, it's all about estimation and projections. So our target we can set togetherly. It is very difficult for us to say individually. So Okay. basically, FY24 we are targeting 110,000 approximately togetherly from both the plant for the GP pipe, GP coil, CR pipe all togetherly. And the next financial year, FY25, we are targeting 1,90,000 approximately. Sorry, 1 lakh? 90,000. This is helpful. And sir, so existing capacity also will be increased from this existing facility of MS tubes and pipes and all that. Yes. So the existing, if you can just give us the existing business, existing plant ka revenue, which was 644 crores, as per I think 95 crores was Tamil Nadu. If I remove 95, roughly we are at roughly 550 crores from the old plant. Yes. This old plant का also expansion हुआ है, उसका कितना turnover जा सकता है? नहीं, ओल्ड प्लांट में से जो आप एमएस पाइप की बात कर रहे हैं, जो 84 से 1,32,000 मेट्रिक टन की एक्सपेंशन हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी FY23 में
394 करोड़ का टर्नओवर रिकॉर्ड किया है फ्रॉम एमएस पाइप। राइट राइट, तो वो 394 करोड़ से हम लोग जो है 582 करोड़ के आसपास जा सकते हैं इन द नेक्स्ट, मतलब दिस करेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके ओके And quantity wise, last year audited figure, MS pipe total sales quantity 65,000 ton, ओके ओके जो हम लोगों ने 1 लाख के आसपास की टारगेट करके चल रहे हैं। 65 का, जिससे टारगेट है 1 लाख। 1 लाख के आसपास की टारगेट करके चल रहे Okay, 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 Yes. okay. And instead of going to that 2,500, if you can break down this year, what kind of revenue you're looking? You said double, around 1,200 crores के आसपास. तो ये साल EBITDA per ton कितना होगा blended on a हैं। तो aggregate देखिए basis? लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट निकला है उसमें 7,500 के आसपास की आपको एबिटा मिल जाएगा उसमें। Okay, okay, तो okay, हम got it. लोग वही टारगेट करके चल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का हमारा खाली पेरुंदुराई का ही था, क्योंकि महबूब नगर का जो भी एक्सपेंशन था वो एकदम 28 जून को, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में प्रेस रिलीज Right, देंगे, 28 जून को हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रेस रिलीज दिए थे। ठीक है, right, right, और अभी भी वो प्रोजेक्ट सेटल हो रहा है, क्योंकि उसमें काफी सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, उसकी क्वालिटी काफी सुपीरियर क्वालिटी हो रही है, जो आगे चल के काफी बड़े इंजीनियरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होगा विथ ए ह्यूज प्राइस। मार्जिन ज्यादा रहेगा, तो right. उसको इनिशियली थोड़ा कम रहेगा, बट सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग उसमें से पॉजिटिवली मिल जाएगा। Okay. एक्सपेक्ट Can करेंगे we जो हमारा टर्नओवर को, टारगेटेड टर्नओवर को अचीव कर लेगा। can you make 10,000 rupees blended EBITDA from this new plant? Sir, my blended EBITDA to the extent of Hariom pipe, all the product basket, I can say roughly it is taken 8,000 rupees in Okay, conservative manner। हाँ, आप जो बात बोल रहे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का ही खाली स्पेसिफिकली मैं लेना है, तो वो आप 10 से 11,000 रुपया ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. बट That's all. ओवरऑल ब्लेंडेड एबिटा आपका 8,200 ही आएगा अगेंस्ट द टोटल क्वांटिटी। This is helpful. Thank you देखिए so क्या much, होता sir. है बेसिकली, प्रोडक्ट एस्टैब्लिश होना, प्रोडक्ट का मार्केट होना, प्रोडक्ट मार्केट का एक्सेप्टेंस होना, फिर उसके बाद रियलाइजेशन होना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस न्यू प्रोजेक्ट व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट इज ए ग्रीन प्रोजेक्ट। अभी ग्रीन फील्ड के अंदर से थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बट यस, फ्रूट्स आर देयर इन इट। दैट्स द रीजन हरिओम इज बिहाइंड इट। जहाँ Okay, फ्रूट्स है नहीं okay. वहां पर हम भी पीछे नहीं जाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन में अमित जी ने मुझे ब्रेकअप दिया था, बोथ तमिलनाडु एंड दिस न्यू हैदराबाद, लुकिंग एट 1,10,000 दिस ईयर एंड 1,90,000 नेक्स्ट ईयर। तो 1,10,000 में से हाउ मच विल बी तमिलनाडु दिस ईयर एंड हाउ मच विल बी नेक्स्ट ईयर, सो दैट आई कैन गेट अ फील ऑफ हाउ मच यू आर बिल्डिंग इन हैदराबाद। सर एक्चुअली देखिए 1,10,000 का जो मैं ब्रेकअप दिया था, मैं आपको यस, स्टार्टिंग में बोला था 1,10,000 एंड 1,90,000 इट इज ऑल अबाउट एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड। ये आपको मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में मैं बोल तो सकता हूँ फिगर मैथमेटिकली, बट इसको जब तक ऑडिट नहीं होता है, कंक्लूड फाइनेंशियल नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं होगा। लेकिन 1,10,000 में आप रफली ले सकते हैं 65,000 फ्रॉम पेरुंदुरा यूनिट and as well as 45,000 from Mehboob Nagar unit for the Okay. current financial year। दैट इज हेल्पफुल सर। 1,10,000 की ब्रेकअप 65-45 रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आई एम डन। या Yeah, thank you, Rusmik sir. थैंक Sir, यू। there were many questions in the Q&A chat box also. So I will take these offline with you because Yes, I wouldn't be please। doing justice if I take just 1 or 2 questions here. So I'll take these offline with you and I'll get them answered and I'll come back to the attendees. But in the interest of time, thank you so much, sir, for coming out, Thank coming today to our conference and giving your valuable time. And I hope there has been a lot of more clarity for the attendees as well through this webinar. And sir, any closing remarks? You've already given the guidance, but any closing remarks? No, we are very optimistic. We are very much aggressive towards our own business, and we'll see that the fruits in the business are already there, and it is only the time which is taking up, and we'll grab the fruits very shortly. So we leave the things ahead the time, and we are just traveling with the time, and जो होगा सब बहुत अच्छा ही होगा। ये बिलीफ के साथ ही हमको आगे बढ़ना है।
Perfect. Thank you so much, sir. And I have left my email ID in the chat box for if anyone has questions, they can send it to that, and we'll get them answered there. Thank you so much. Thank Take you. care. Namaskar. Thank Thank you, you. sir. Take Thank care. you, sir. Bye.